So the question number one says the diagram represents transverse section of three plant organs. जिसमें उन्होंने they have shown कि first वाला root है, second वाला stem है, third वाला leaf है. बहरहाल in this question it's a good thing that they have labeled it, but that they have labeled के root कौन है, stem कौन है, leaf कौन है. इसके अलावा there may be some questions with where they do not label के which of the following is which. यानी कि they'll not tell you that this is a leaf, this is stem, this is a root. So you need to understand their labelings. And when we were doing the topic, I'd mentioned it कि जो vascular bundle होता है उसकी placement different होती है in root, stem and in leaf. तो वो आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है. अब यहाँ पर they're asking कि which row is correct for phloem, meaning that they're now asking you कि where exactly phloem is located in all three of them. So I know that you're not aware कि किस तरीके से लेबलिंग करनी है, because obviously slides में भी हमने superficially हम इसको देखते हैं. But now you need to understand कि जो roots होती हैं उसमें phloem is always located outside, and inside यानी जो अंदर वाला part है, this is your xylem, whereas जो बाहर वाला part है, this is phloem in a root. But if they'll ask you कि where is xylem in a root, then you'll say कि this is xylem and this part is phloem. ठीक है? For roots. Then for stem as well, stem में भी जो बाहर वाला region है, this is your phloem, while the region inside, यानी this one, this is xylem. So it's easier for you to remember for roots and stems. Okay, in root and in stem, the phloem part is located outside, or it's located towards the outside, but the xylem is inside. But this is an inverse scenario for leaf. यानी पता नहीं क्यों I used to think कि बाहर जो है वो leaf का ये वाला part होता है और ये वाला part अंदर होता है. This is how my brain interpreted this question, but ये गलत था. इसमें मुझे मेरे हिसाब से ये वाला जो पार्ट है ये अंदर है और ये वाला पार्ट जो है वो बाहर है. बट आप इसको जैसे भी इसको समझना चाहो, बट जस्ट रिमेम्बर कि जो अंदर वाला, जो मेरा अंदर वाला पार्ट है, यानी मेरे हिसाब से जो अंदर लोकेटेड है ये आपका फ्लोएम है और ये बाहर वाला जाइलम है. सो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि फॉर रूट्स एंड स्टेम जो बाहर वाला पोर्शन है वो फ्लोएम है, बट दिस इज एन इनवर्स सिनेरियो फॉर लीफ, जो बाहर वाला पोर्शन है वो जाइलम है और जो अंदर वाला पोर्शन है वो फ्लोएम है. ठीक है. सो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इसको किस तरीके से समझते हो. कुछ बच्चों को यही वाला पार्ट बाहर वाला लगता है और कुछ को वो अंदर वाला लगता है, बट मेरे हिसाब से ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो बाहर है और जो नीचे वाला पार्ट है वो अंदर है. तो ट्रांसफर सेक्शन है इसलिए इसको मुश्किल है लेबल करना, बट रूट्स और स्टेम में तो इजीली हो जाता है कि जो बाहर वाला पोर्शन है वो फ्लोएम है, अंदर वाला जाइलम है. ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. तो आई सजेस्ट दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत बहुत दफा आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए P1 और P2 में आएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. अच्छा जी. अब अगर उस्मान, आई एम नॉट श्योर कि आपने कल ट्रांसलोकेशन में, मैंने क्योंकि कल पढ़ाया था, एंड आई एम नॉट श्योर इवन अबाउट मिन्हा, रिकॉर्डिंग नहीं थी उसकी अभी अवेलेबल. आई थिंक कल तक अपलोड हो जाएगी. बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं अगर नहीं समझ आता. Question number two is about translocation is a process in which plant conducts the food to all parts of the plant. ठीक है. So we did translocation yesterday. Now they're saying sucrose moves from phloem sieve tube element into root cell, which changes to the water potential and the volume of liquid in the phloem sieve tube elements are correct. So we discussed this yesterday in our slides as well. It's written in the slides. Okay, as the sucrose is loaded into phloem sieve tube, the water potential initially it decreases and then it increases. So it decreases ताकि उसमें सुक्रोज लोड हो सके, बट वन सुक्रोज इज देयर, वाटर पोटेंशियल उसका हाई हो जाता है. उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू पानी, द वाटर विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड द sieve tube element. ठीक है. सो वाटर पोटेंशियल विल increase eventually while the volume of liquid will decrease. ठीक है. So the answer for this part is option A. ठीक है. Next we have is question number 3. Which statements about water movement in plants are correct? I think Usman, you'll be able to answer this one.
ठीक है. About water movement. Miss C. Mm, Water can pass through cell walls containing layers of cellulose fibers. Yes, ये हो सकता है. Water can pass through cell walls containing rings of spirals of lignin. Water pass कर तो सकता है ना? Spirals of lignin, यानी spirals of lignin. They're talking about xylem. So xylem से तो water conduct हो सकता है, water pass करता है. Water cannot pass through a band of suberin in cell walls. Yani apoplast pathway mein there comes a point where water conduction cannot take place further because of the deposition of this waxy layer called Casparian strip or suberin strip. So all three of them are correct. It can pass through rings of or spirals of lignin because lignin is a deposition present on xylem. Okay. Now, this question. Which labeled features are characteristic adaptations of many xerophytes? So take a screenshot of this question as well. This is also a very important question and I've seen it repeatedly. So xerophytes were the ones जिनमें the rate of transpiration is reduced due to sunken stomata and they have thick waxy cuticle and they can survive in tough adverse conditions where water is not present. So इसका आंसर भी आसान है. It's not difficult. It says which label features a characteristic adaptation of many xerophytes. So number one is your sunken stomata. ठीक है, number one is your sunken stomata. Stomata आप देखो कि यहाँ पे इतना inside है. While the normal plants होते हैं, their stomata is just superficially there on lower epidermis. So one is your sunken stomata. Two में क्या दिया? मैं two में उन्होंने आपको hairy structures दिए हैं, जिसकी हमने बात की थी that they act as a barrier against the water loss or against the transpiration. तो ये भी adaptation होती है. And number five, क्या है? Number five is the thick waxy cuticle which is present on upper epidermis. So 1, 2, and 5 are your answers. Fourth wala is not going to be our answer because fourth or number 3, both of these features are present in a normal leaf as well. Okay? 2 and 5 are those adaptations which are present in many xerophytes in order to prevent excessive amount of transpiration. ठीक है, अब देखें ये question, it's there. So take a screenshot of this question as well. But now they have not labeled which of the following is root, which of the following is stem, and which of the following is leaf. So this is the same question that I'm mentioning again and again. कि twist and turn करके आता है. So now I hope that you'll be able to identify which of them is a leaf, which of them is a root, which of them is a stem, and you'll be able to identify phloem and xylem in a correct manner. So give it a try. Miss A. वन में फ्लोएम, ठीक है. टू में क्या दिया हुआ? फ्लोएम, परफेक्ट. और 3 is your फ्लोएम, ठीक है. ए, एक्सीलेंट. 7th वाले का आंसर. Which row correctly describes the adaptations of companion cell, phloem, seed tube elements, and xylem vessels element for their roles? So companion cell or phloem, seed tube अगर नहीं हुआ था तो perfectly fine. Let's identify for xylem vessel first. Many plasmodesmata. Plasmodesmata is the junction which is only present between phloem, seed tube, and companion cell. So plasmodesmata is out of option. Then strong simplified cell walls for supporting the plant. This could be your answer. Then empty cells allowing water to flow freely. ये भी हो सकता है. A thin layer of cytoplasm to reduce the resistance to flow. Thin, ये भी आपका relevant answer नहीं है. इसमें से strong lignified हो सकते हैं, empty cells हो सकते हैं. ठीक है. अब xylem के लिए तो हमने identify कर लिया. Now we need to identify for phloem, seed tube element and companion cell. So companion cell जो है वो आपका many empty cells allowing water to flow freely ये नहीं हो सकता obviously because this is something which we are already saying कि this is only eligible for xylem vessel element. तो B इसका आंसर नहीं हो सकता, obviously फिर C होगा. क्यों? Because हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. कंपेनियन सेल में वाटर का कहाँ से काम आया? So automatically you jump कि आपका answer is C. But we can see कि इसमें क्या कह रहे हैं? For companion cell, they're saying many plasmodesmata for communication between cells. Excellent, because plasmodesmata is a gap junction present between companion cell and phloem seed tube element, so that it could allow communication between both of them. A thin layer of cytoplasm to reduce resistance to flow. So automatically you jump के option C is your answer.
अच्छा जी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग का लग रहा है मुझे क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली नहीं दिए हुए, तो वी आर गोइंग टू स्किप दिस वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। नहीं भी आता तो मैं करवा दूंगी ऑब्वियसली। Which row shows the cause of mass flow in the phloem in the direction of movement of phloem sap by mass flow? So, cause of mass flow in the phloem, direction of movement of phloem sap by mass flow. So I just said कि source is the site where sucrose is made and sink is the site where sucrose is needed. ठीक है, तो सोर्स टू सिंक आपको आना चाहिए कि सोर्स कौन सी मूवमेंट इनिशिएट करवाएगा, क्या सिंक से सोर्स जाएगा या सोर्स से सिंक जाना चाहिए? सोर्स टू सिंक जाना चाहिए, बिकॉज सिंक इज द साइट वेयर सुक्रोज इज नीडेड एंड सोर्स इज द साइट वेयर सुक्रोज इज मेड। तो ऑब्वियसली मास फ्लो जो होगा वो सोर्स टू सिंक होता है। एंड नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट जिसकी अभी हमने बात करी थी, तो हमारा आंसर इज भी। या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन source and sink, कि जैसे ही sucrose is loaded into companion cell, the water potential is going to reduce, and then water will move through osmosis and will cause mass flow. So there will be a pressure difference, or there will be a pressure gradient between source and sink. So this is going to be your answer. ठीक है, अच्छा जी। Now, let's do transport and plants के paper 2 वाले questions. So, इसको देखते हैं। अच्छा जी, इस वाले पैसेज का ना आप लेना स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये वाला पैसेज बहुत दफा आता है। तो है तो 3 मार्क्स का, पर काफी रिपीटेड टाइम्स मैंने इसको देखा हुआ है। इसको इसलिए जो है ना हम अच्छे से करेंगे। अच्छा जी, उस्मान, रीड अलाउड करना है इसको, आप करना चाहिए। ठीक है मिस। Phloem tissue consists of different cell types. Complete the passage using the most appropriate terms to summarize some of the features of phloem tissue. Hmm. हम्म। The end walls of sieve tube elements are modified to allow efficient flow of phloem sap by the formation of uh, फिर बीच में सीप ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो एफिशिएंट फ्लो करवाता है फ्लोएम सैप का। दे आर टॉकिंग अबाउट सीप ट्यूब एलिमेंट्स ना, तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं फ्लोएम का, तो इसमें आपके पास ये वाली जो चीज है, ये यानी आप इसको सी प्लेट भी बोल सकते हो, सी पोर भी बोल सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू अलाउ एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ द फ्लोएम सैप। ठीक है, बिकॉज they're talking about they're talking about seed tube elements, they're not talking about companion cell। तो companion cell अगर इन्वॉल्व कर दे तो हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, बट they're talking about sieve element, तो इसमें हम सी प्लेट या सी पोर कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, these structures also prevent the cells from bursting under pressure. The cytoplasm of sieve tube element is very much reduced and is found at the of these cells हाँ, at the center of the cytoplasm of sieve tube element is very much reduced। तो ये देखे reduced है, तो it's found at the edges, it's not found in between। हाँ, ये बीच का हिस्सा जी देखो, it's empty, so the empty part does not show cytoplasm। So cytoplasm in sieve element is present towards periphery or at the edge, so you can write edge। ठीक है, ठीक। Most of the organelles in the cells are absent. Adjacent to sieve tube elements are the companion cells. companion cells, because companion cells in sieve tube elements they combine together and they combine to form phloem। सही है। So ये 3 आसान सी बातें थी। They could give you a passage for companion cell as well। This was primarily about sieve tube element, but they can give you for companion cell as well। तो इसलिए you need to see the structure of phloem carefully, because उसमें आपको एक possibility देख सकते हैं that sieve tube element does not have, क्या नहीं है उसके पास it does not have a nucleus, it does not have ribosomes। सही है। So they could give you something like that, or they can say the companion cell has something which is not present in sieve elements. So uska answer be likewise ribosomes, and uska answer be vacuole or nucleus हो सकता है, because you can see कि यहाँ पे vacuole नहीं है, इधर vacuole है। So companion cell is metabolically more active as compared to sieve element,
So they could give you a comparison between sieve element and companion cell, and for that you need to look at the structure carefully. ये आसान आसान क्वेश्चन हैं। ये वाला तो अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेड मैमल्स अभी पढ़ना है। ये वाला जल्दी से बताते हैं, उस्मान फिफ्थ का 5A। मिस जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होलो होता है, जिसकी वजह से वो लाइक इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेते हाँ एक्सलेंट। विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है वो हॉलो लिग्निन हॉलो स्ट्रक्चर है। सो हॉलो स्ट्रक्चर की वजह से ईज ऑफ कंडक्शन होती है, किसकी कंडक्शन, वाटर की। ठीक है। हैं। ठीक। एंड और मिस फ्लोइम नहीं, इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लोएम। इसमें आप बता सकते हैं कि इट हैज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन which provides mechanical support to the structure of xylem. ठीक है। these specialized root epidermal cell that provides a large surface area for the uptake of water from the soil. Uh, ऑप्शन क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। root hair cells. root hair cell because they provide a large surface area due to the presence of, जो इनका hairy structure होता है उसकी वजह से they provide a large surface area। ठीक है। root hair cell। बी वाला पढ़े। The band of serbidin in the cell walls of the endodermis that prevents the movement of water by the apoplastic pathway. Uh, Casparian कैस्पेरियन स्ट्रिप। strip. एक्सीलेंट। कैस्पेरियन। जो ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स के P2 के क्वेश्चन है ना वो बेसिकली इसी तरीके के आते हैं। ऐसे ही आपको वो इंस्क्रिप्शंस देते हैं, कभी जीरोफाइट्स की दे देंगे, कभी नॉर्मल किसी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की दे देंगे, तो इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, इसी तरीके के आते हैं। सी वाला। The cell structures that allow water to pass from one cell to the next as part of the symplastic pathway. This doesn't allow water. Cell wall? No, फ्रॉम no. वन सेल टू द Cell mem. नेक्स्ट। Uh, cell mem. नहीं, cell. Cytoplasm. द सेल Cell स्ट्रक्चर membrane. जो अभी बताया था, जो स्टीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल के बीच में होती है, क्या चीज होती है। Plasmodesmata. Plasmodesmata. So plasmodesmata is the structure which you'll talk about only in transport in plants. जहां पे भी communication का word आ जाए या transport का word आ जाए from one cell to another ना, वहां पे you have to write plasmodesmata because it's the gap junction present between plant cells so that it could allow the movement of water from one cell to another. Yani from sieve element to companion cell. So plasmodesmata is that gap junction that offers communication. ठीक है। ठीक है मिस। सो अच्छा जी, नाउ लेट्स टेक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक। सो 8:35 पे आई ओपन द क्लासरूम।